हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं. Let's talk about the merits of work instead of I am a foreign graduate and I'm a local एब्सोल्युटली graduate जी, and all that एब्सोल्युटली. jazz. मैं समझती हूँ कि हमारे some of the greatest legal minds in our country are local graduates. How would you rate your experience? And what would you give out as a message to the young girls who are hesitant or who are thinking to come to this profession? This is if you're okay with your comfort zone and you're okay on blaming things on society or your parents or somebody, this is not your profession. लोगों की जिंदगी आपके हाथों में होंगी. आप एक पूरी जनरेशन तबाह कर सकते हैं अगर आपने अपना केस टाइम पे सही तरह प्रिपेयर नहीं किया. बाहर से जो पढ़ के लड़के या लड़कियां आते हैं उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो वहीं रहें, वहीं प्रैक्टिस करें, पाकिस्तान वापस ना आए. I did law with the idea कि मैंने हमेशा पाकिस्तान आके काम करना है. मैंने अगर सोचा होता कि मैंने पाकिस्तान नहीं आना, मैंने बाहर रुकना, तो मैं कभी भी लॉ ना करती. So I love law, but I'm also passionate about this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. वुमेन ऑफ लॉ के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी होस्ट एडवोकेट शिजा कुरैशी आपके सामने हाजिर हैं. आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो ना सिर्फ मेरी दोस्त हैं बल्कि उनका एक बड़ा डाइवर्स और बड़ा मज़े का लीगल बैकग्राउंड है. लॉ में तो उन्होंने पाकिस्तान आके क्योंकि उनकी एजुकेशन बाहर की है, बट शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने पाकिस्तान आने को प्रेफरेंस दी. एंड कमिंग फ्रॉम अ प्योरली बिजनेस बैकग्राउंड वो पाकिस्तान आई और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया. मैं इस शो को शुरू करने से पहले ये भी बिल्कुल अपने नाजरीन को बताना चाहूँगी कि हम दोनों उन लोगों में से हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, जिन्होंने ऑल वुमेन लॉ फर्म की बुनियाद लाहौर शहर में रखी. हम लोग फर्स्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया. तो मैं बिल्कुल अपने गेस्ट की तरफ जाना चाहूँगी. बैरिस्टर अस्मा खावर ख्वाजा, वेलकम टू द शो. Thank you so much for having me. Great to be here. प्लेजर इज़ ऑल आवर्स. अस्मा, हमें ये बताएं कि आप जिस तरह के मैंने अभी जिक्र किया कि आप एक प्योरली बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपकी फैमिली में भी किसी ने लॉ ऑप्ट नहीं किया. तो बिफोर आस्किंग अबाउट योर लीगल करियर, दैट हाउ वाज योर अंडरग्रेड एंड हाउ वाज योर बार, why did you opted for this, not for something else? Because at the time, I really enjoyed studying law. I opted for law because I liked studying it. I have to say कि जब मैं इसको पढ़ रही थी अपने A levels वाले टाइम में, मेरे सबसे अच्छे ग्रेड्स लॉ में नहीं थे. मेरे थे IR, सोशियोलॉजी, बाकी चीज़ों में आए थे. I think so. Grades are not a litmus. I They believe are that. not. Because that's the litmus, right? कि आप उसको अपने बैचलर्स में पढ़ो जिसके नाम आपके सबसे हाईएस्ट हैं. But I opted for what I was passionate about, even if it was not showing up on paper. Great. That is a great decision. Yeah, that's why I opted for law. Great. So, in furtherance of that, अब आप हमें ये बताएं कि अंडरग्रेड कहाँ से किया, कब किया, बार कब किया, पाकिस्तान कब वापस आई? So मैंने अपना अंडरग्रेड किया था बर्कबेक यूनिवर्सिटी से. ये लंदन में है. ये सोएस और यूसीएल की उसी रसल स्क्वायर की विसिनिटी में है. और बर्कबेक इतने शायद देसियों को लोगों का नहीं पता हमारे मुल्क में, पर इट इज़ अ फिनोमिनल लॉ स्कूल. I then afterwards I did my bar at law from City University. I did my masters in law in criminal hearsay and Islamic jurisprudence Amazing. from City University as well. I'm associated with Lincoln's Inn as well. And but I have to say my top favorite legal education was my undergrad, because the professors that I had at my university, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लॉ की जो डिग्री पूरी दुनिया में है ना, जिसका टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लीगल मेथड्स की जो कोर किताबें हैं, जिन्होंने वो लिखी हो मेरे प्रोफेसर्स थे. Amazing. और उनके पास अमेजिंग लाइक दे हैड दिस लिबर्टी ऑफ टॉकिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द कोर्स द वे दे वांटेड. तो लैंड लॉ में पूरी दुनिया पढ़ी थी, ठीक है, कोर लैंड के इशूज हमने भी पढ़े, पर हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि हाउ कॉलोनाइजेशन टुक प्लेस, हाउ इट वाज लीगल. तो हमारा जो एक लीगल दिमाग था उसको जैसा नर्चर किया गया था, इट वाज अमेजिंग. आई particularly really enjoyed my dissertation in my undergrad. It got published by my university. It was on Brexit. Amazing. And on Eastern European migrants as a foreign economic investment. और वो अभी तक वैलिड है क्योंकि अभी भी पोस्ट ब्रेक्सिट ही इनको इश्यूज आ रहे हैं. तो आई डू एंजॉय स्टडिंग लॉ,
मेंटल हेल्थ आपकी तबाह कर देता है, आपस की बात है, पर इट्स अ चैलेंज एंड अ हाफ, but I do enjoy studying. So I'm very glad to know about someone who has actually enjoyed and is passionate about, वरना इस प्रोफेशन को कंटिन्यू पैशन के बगैर करना इज नियरली इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा कि बाहर से जो पढ़ के लड़के या लड़कियां आते हैं उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो वहीं रहें, वहीं प्रैक्टिस करें, पाकिस्तान वापस ना आए। सो बिफोर आई आस्क यू दैट, where and when and how was your experience in Pakistan in regards to the practice? Did you what actually was the driving force to come to Pakistan and not staying back there? So I did law with the idea कि मैंने हमेशा पाकिस्तान आके काम करना है। मैंने अगर सोचा होता कि मैंने पाकिस्तान नहीं आना, मैंने बाहर रुकना, तो मैं कभी भी लॉ ना करती, बिकॉज मुझे और इंटरेस्ट चीज़ों में है। तो मेरा लॉ ऑप्ट करने की वजह यही थी कि मैं वापस मुल्क में आके आई थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और उस वक्त और इस वक्त मुझे लगता है कि लॉ is the best way. Indeed. Or even though I had jobs lined up, I was doing internships with chambers and all of that, but I left it and I came back because मुझे लगता था कि अगर मैं रुक जाती, उधर काम करती, तो मेरे लिए पाकिस्तान वापस आके सिस्टम में काम करना बहुत मुश्किल होना था। एंड आई एम रियली ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज जब वापस आते हैं आपको कल्चर शॉक होता है फिर से, इवन तो मैं पूरी that is what I'm talking about, the cultural shock द basically. कल्चर शॉक इज देयर, इवन तो मैं पूरी जिंदगी मेरी इधर ही है, पर मैं पढ़ाई के लिए गई थी, पर वापस जब आप आते हैं आपको कल्चर शॉक होता है प्रोफेशनली। तो इधर जब मैं आई थी इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन रिगार्ड्स टू द फैक्ट के लॉ इज नॉट एन ईजी प्रोफेशन। Indeed, it is not. It is equivalent to, if in some ways, more difficult than medicine. बिल्कुल, Stress आप levels इसमें से ज़्यादा 2 हैं. मिनट जेंडर्स वाला एक वो जो एलिमेंट है वो निकाल भी दें, everybody has to Yeah. strive. And I feel like, particularly with women, it's harder. It's It like is. saying, okay, as a black person to work in an all-white law firm in like central Very London, it's relevant. easy. No, it's not. There are racial biases. So you have to be conscious of that. पर वो एक another एक और hurdle होती है, और क्योंकि मेरा background नहीं है और मेरी लाइक एक ख्वाजा कश्मीरी बैकग्राउंड है, तो हम लोग नेपोटिज्म का तो कोई दूर दूर तक सीन नहीं है, जिसका मतलब है कोई हेल्प वेल्प नहीं थी। और मुझे एक शायद मुश्किल से इंटर्नशिप किसी जज के साथ अबू ने लेके दी थी, वो भी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास अपने केसेस आए हुए थे। तो उसका ये कि आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम स्क्रैच, आई रीच्ड आउट टू पीपल, इट रियली हेल्प्ड आउट। आई डिड इंटर्नशिप्स इन द लोअर कोर्ट्स, मैंने सबसे पहले लोअर कोर्ट से शुरू किया था, जिसको कहते हैं ना गंदा काम, लाइक तो कचहरियों वाला, कचहरियों वाला काम मैंने वहां से शुरू किया था। क्योंकि आप एक दफा, इट्स लाइक नार्निया, मैं तो कहती हूँ नार्निया का आप दरवाजा खोलते हो ना, एक पूरी एक नई दुनिया एक अलग होती है। उर्दू अलग है, बातचीत का तरीका अलग है, कल्चर चाय का ये चीज़ों वीज़ों का बिल्कुल अलग है। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई हैव टू से कि I have been working in the kacharis for a good, going on and off, and like for 10 years now, on and off, right? During my student career, afterwards as well. I have never had any problem from anyone in the kachari. I just want to Ever. मैं ये बात बहुत loud preach करवाना चाहती हूँ, that came out of her very naturally. मेरा भी यही experience है that I also joined my firm during my law school, और मेरा भी बिल्कुल एक यही है। और discourage जो लोग करते हैं वो प्लीज इस बात को जरूर देखें। एग्जैक्टली लोग कहते हैं ना कि तुम वकील बन के कोर्ट कचहरियों में काम करोगी, मैंने किया है, और उसका सीन ये कि वो ही बेहतर जगह है। मैंने देखा है कि आई फाउंड दैट फॉरेन एजुकेटेड lawyers have been more disrespectful towards my profession, me in general, because they take their privilege as a power 100%. thing. This is what I also want to talk about all the time. That okay, we respect you. Like I am a local graduate, but मैंने ये जो एक देखा है perception foreign graduates का बहुत कम लोगों में, like you and I know a couple of other friends जो ये इस चीज़ को नहीं ज़्यादा weightage देते काम के ऊपर। Let's talk about the merits of work instead of I am a foreign graduate and I am a local graduate and absolutely. ये yes. बिल्कुल एक बायस है कि मैं कहती हूँ कि आपको प्लीज, एक तो ऑब्वियसली आप ठीक है फॉरेन डिग्री, मैंने भी सारी मेरी फॉरेन डिग्रीज हैं, अच्छा है, इट्स अमेजिंग, पर मैं समझती हूँ कि हमारे सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीगल माइंड्स इन आवर कंट्री आर लोकल ग्रेजुएट्स। बिल्कुल। और उनको अनफॉर्चुनेटली, मैं खुद सियालकोट से मेरा ताल्लुक है, उधर भी मेरे चेम्बर्स हैं, और वहाँ पे वी हैव सच ब्रिलियंट माइंड्स,
बट क्योंकि उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स पंजाबी और उर्दू में है, पर उनका जो लीगल माइंड है इतना कमाल और इतना अमेजिंग है, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस, उनकी इन डेप्थ रिसर्च, पर which are the actually द क्रक्स which ऑफ are the लॉ। actual characteristics of being a good lawyer, but unfortunately वो जो एक colonial hangover वाला एक जो problem है एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ, 100%। so that is another thing. अब मैं आपकी तरफ as a female lawyer, Asma, I would want to definitely ask that बिल्कुल strictly एक female lawyer के perspective से मुझे बताएं that what would you how would you rate your experience, and what would you give out as a message to the young girls who are hesitant or who are thinking to come to this profession? I would say that odds will be against you. If you're okay with your comfort zone and you're okay on blaming things on society or your parents or somebody, this is not your profession. If you are comfortable with your power and you know what you're capable of and you can stand your ground, there is no one who can do anything to you. This is an extremely powerful profession. And if you survive, I call it survival because it's the equivalent, like just a medical profession is extremely hard. It's very difficult. The work itself is very strenuous, high stress. Law is the same. लोगों की जिंदगी आपके हाथों में होंगी, आप एक पूरी जनरेशन तबाह कर सकते हैं अगर आपने अपना केस टाइम पे सही तरह प्रिपेयर नहीं किया। So to the women, I say, no, you don't need to have a legal background. Yes, it will be hard. It will be stressful. But if you survive, I call it the house job years. तो पहले 2-3 साल पैसे कम है, उस पे आप प्लीज जवलियां पैसे तो मत है ही मारें। नहीं, मतलब दो पैसों तीन का तो साल जो नहीं आज है है, मेरा ख्याल है वो शुक्र करें. but if you can acquire the skill, even if you can write down a decent contract, even if you take up the idea of how to make patents, something as simple as knowing how to register a company Exactly. even, एक चीज भी अगर आप पकड़ लें, ये मेरी फीमेल लॉयर से है, start off small, know your stuff, there is nothing that can happen to you. And keep going. Yes. सबसे hang in there and keep going. This is what I always say. And speaking about someone coming from a legal background or not, I am someone who belongs to a firm. We are the third generation of lawyers. And I always say that, you know this, the reason why we teamed up and we, opted for that firm. I didn't wanted to carry that baggage of, coming from a privileged background in sense of a legal background. लेकिन मैंने जो कुछ सीखा है वो अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, और इस प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कोई कुछ सिखाता नहीं है. यू आर योर ओन टीचर एंड बॉस एंड वट एवर नॉट, सो हैंग इन देयर. तो आपके पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के बारे में तो हमने ले लिया एक ओवरव्यू आपसे. फिर आप, ये मैं आपसे पूछना भूल गई कि यहाँ के ज्वाइन आपने आपका केसेस किस तरह के किए, ज़्यादा किस साइड पे, किस नीश में आपने काम किया? तो मुझे इंटरेस्ट में, मेरा इनिशियली जब मैं आई थी मुझे था कि मेरा ह्यूमन राइट्स और एक्टिविज्म से ताल्लुक 16-17 की उम्र से रहा है, पर मुझे इंटरेस्ट काफ़ी था कॉर्पोरेट की साइड पे. पर जब मैं वापस आई तो एक ओवर आर्चिंग अमाउंट ऑफ केसेस मुझे आए थे ह्यूमन राइट्स रिलेटेड. तो मेरा पहला केस था खतीजा सदीकी का. आई वाज 23, फ्रेश ऑफ द बोट जिस तरह कहते हैं. I was with 1 or 2 other lawyers. Salman Safdar was the lead lawyer in that. It was a very good learning experience. And then I've worked with the Chief Justice of Punjab back in 2016 on a research report on judicial policies. Amazing. I've done a lot of these other fancy things, as we like to put it, on CVs. But what I'm most proud about is that the individual cases that I took up, I've taken up cases of rape against girls, minors, 6-7 years old, child molestation, 4 to 5 years old, very difficult to prove in court. I've taken up a lot of domestic abuse cases. I've also mediated a lot of divorce cases out of court. जिसके अंदर you can solve a lot of issues out of court. तो वकीलों को होता है कि जी केस दें, हम केस फाइल करते हैं, मैं फी दें. मेरा रूल ही है expedite the cases. So I either don't charge money at all or I charge. This is also, and that's what you should do. That's not a joke. Yes, it's not. Because I've spent 10 years in this education. I've spent crores, I'm going to be frank, worth of on my education, as many of us have.
and I've spent hours and hours on the skill. So charge your clients. This is the main mentor ne kaha tha. This is the respect you owe to yourself. And if you're doing pro bono cases, do fully pro bono. And I give it my 100%. That is how you have to balance. Don't be half about it. Half like you about have it, to yes. be fully, invested. So a lot of the cases that I've taken up is that it's mostly human rights and domestic abuse and rape trial related. I've mediated some contracts out of court. I mediated a contract between a really interesting company. It's a German-based brand, TK, with Adidas. They were pitching a product. So this is also where law comes in, because you're supposed to present contracts, and sometimes your client cannot present it as well. So you have to do it on behalf of them. So I've experimented a lot with law and its areas. But unfortunately, I've been successful in 100% of my cases. I've never lost a case. Zabat. I am so glad. But to the hear only about thing that. I have to say is, unfortunately, I've only had one instance where my client has backed out, and that was a rape trial. We were together in We that. were together in yes, that. In fact, that was our last case yeah, together. That was our last. And that was heartbreaking. Yes, because we both worked really hard on that case, and it was very traumatizing as well. But because the system was just, this is we how can't it even works. start on that. Yes, It's beyond us lawyers in that sense. Beyond us lawyers, beyond exactly. the police even in that sense. Beyond anyone. It's just very unfair. So that was only, I think, an instance I've had. बिल्कुल where it's always the part of the game, I guess. वो कहते हैं ना कि जब केस जीतते हैं तो लॉयर्स जीतते हैं, हारता है तो क्लाइंट हारता है. Just on the lighter note, moving forward, Asma, आप मुझे ये बताएं कि what experience did you have when you were back in London? वो आप एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के आपने वहाँ भी काम किए हुए हैं. So I would like to have a brief roundup that how was your experience working there, and how do you compare here with Pakistan? I mean, I think that working in London is unparalleled. I have to be honest. I feel like there's certain skill sets that you learn. In particular, अगर आपने litigation में नहीं जाना ना, criminal civil litigation में, I feel like that foreign initial work is important. Because वो जो आपको मेरी अम्मी से कहती हैं रगड़ा देते हैं, और जिस आप एक कैलकुलेटेड प्रोग्रेशन से जो काम सीखते हो, वो आप नहीं सीखते हो कहीं और. So वहाँ पे I worked with a few barristers in their chambers. I subbed in. I did mini pupilages जिसके अंदर हमने client consultation किए हैं. मैंने उनको help किए case prep के अंदर. मैंने subpoena serve किए हैं. Afterwards, some experience. I also spoke and gave lectures at I gave a lecture at Goldsmiths University in comparison to women's rights in Pakistan and the Black Lives Matter movement in the West. I also spoke at the House of Commons on the topic of the Kashmir issue. And this is when it was at peak. And unfortunately, the Pakistani state representative was not bringing up the Kashmir issue at a Kashmir convention. So I spoke about the Kashmir issue at the time, and it's been a very, very lovely experience. I'm so glad to hear that. So you have the experience of the outside, and then after that, मैं उसको fast forward इस तरह से करूँगी कि you prefer to come back here and work here for your people and for the country. That is what matters a lot. We need a lot of more people like Asma in our country. Moving forward, Asma के बहुत सारे, जब मैंने शो शुरू किया, I said I have a very diverse personality sitting right in front of me. That means she has a very profound interest in filmmaking. She has learned that as well from like professionally, or she has a very much invested interest in arts, music. So Asma, वो बताएं, what side of yours? We want to know that side of yours as well. So when I was opting for my degree, I was at a path where I had to choose law, or I was choosing performance and liberal arts. So it was London law or Melbourne, Sydney, and Melbourne, Australia for performance arts. And my parents said, you can't do that. You can't do law later on. You can always go into arts. And I'm glad I opted for that. But that later on, you realize never comes, because work never stops. So I've taken this moment, this is post-COVID, I created a startup, because मैं इस law में sane रहती हूँ, वरना honestly you start going insane. Start turning into like this wild boar that wants to attack people. It's a very nerve-wracking game, you understand. So how I stayed sane was that I would dabble in the arts. I would write, produce, sing, film,
just for my own sanity, not for anyone else. And I realized I have this deep passion for promoting, savoring the Pakistani culture and heritage. That's So nice. what I've done is that I have a startup and I have a business now that I'm currently working on. And I paused law for about 6, 7 months at the moment to focus on that. And that is my passion project. So I love law, but I'm also passionate about this. And this is why it's extremely important to let people know that you are a very multifaceted human being. एक चीज आपको define नहीं करती है, and it's okay. And this was a huge struggle I had. Can I be a lawyer if I'm giving? No, this is my power. Because I look at law and I look at things very differently because of my creative mind. So right now I'm focusing on that. I'm very, very happy with it because we have some amazing local talent on board. And it's basically a place for people like me who could never go into arts to go into arts. Acha, Asma, that was a very lovely roundup of all your activities, including the law, your experience outside the country, और पाकिस्तान में आपने जो काम किया. हमें एक last message, being a female lawyer, being a female litigator, especially आपने criminal side पे ज़्यादा काम किया है. I just really want कि आप just give out a message that what would you convey to the girls again who wants to, या वो कंसिडर कर रही हैं कि वो कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करें, या जो लड़कियां जो स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, जो हिम्मत वाली हैं, क्योंकि ये इसके बगैर तो इस प्रोफेशन में स्टिक करना नहीं है. व्हाट मैसेज वुड यू कन्वे टू ऑल ऑफ दोज गर्ल्स? I would convey this message that we all look for advice. I did too. I didn't get a lot of good advice. So, my best advice to you is that there's only one of you. You will not be repeated in this world again. So, the only person that knows what is best for you and your career, you know it, it is in your gut, follow that. Because an uncle that is a lawyer for 55 years and has inherited a law firm for 3 generations, or a judge and he's giving you advice as to how to be a good lawyer, will not apply to you. Don't waste your time. And how, I'm sorry to cut it off, and how he might not encourage you much. He may not to encourage you stay कि आप here क्या and to कर do रहे हैं. it. Please do not Absolutely. listen to that. Because you are a threat. You can challenge their fees. So, know your power, embrace your power. Nothing will happen to you if you have your power in your hands. And my favorite share that I repeat every single time by Jigar Muradabadi is हमको मिटा सके इस ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं. That is my advice to you. But what an amazing piece of advice, with what an amazing concluding share in the end. I think so it's a lot of encouragement. इसी नोट पे हम अपना आज का शो ख़त्म करेंगे. अगले शो के लिए इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.